Assalamu alaikum. Acha, today we are going to discuss the third chapter in the Pharmacognosy second year course for the Doctor of Pharmacy students. The name of the chapter is the study of two drugs belonging to various families of medicinal importance. And in this chapter, there are a total of 12 families. We will try to discuss one family in each lecture. So the first family in this chapter is the family Ranunculaceae. Family number one we have is Ranunculaceae, which is also known as the buttercup family. Now this buttercup family includes about four plants that are part of the syllabus, and those four plants are number one Aconitum, Larkspur, Pulsatilla, and the last one is the Hydrastis. Now we will discuss each plant one by one, and this family, which is known as buttercup family, mostly this family has these flowers which are cup like, so that's why they are known as this buttercup family. And if you look at the first plant in this family, so it is the Aconitum. The common names of this plant are Meta zehar, monk's foot, wolf's bane, aconite root और mouse bane. So ये इसके जो common names हैं वही है, और mostly इसको monk's foot इसलिए कहते हैं कि because the flower looks like the hood that is worn by the monks. So the flower इसका इसके flower का जो appearance होता है that is like the hood that is worn by the monks. So that's why it is also called monk's foot. और इसके अलावा वोल्फ्स बेन और माउस बेन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि द पास्ट दिस प्लांट वाज यूज्ड टू किल माइस वगैरह में को किल करने के लिए इस प्लांट को यूज़ किया जाता था. सो इसका बोटेनिकल नेम जो है दैट इज एकोनाइटम नेफिलस, और इसका जो पार्ट मेनली यूज होता है फॉर मेडिसिनल पर्पसेस दैट इज द रूट्स. सो ड्राई ट्यूबरस रूट्स आर द पार्ट दैट इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. नाउ अगर इसको अगर आप फ्लावर को देखें, ये मंक्स की जो वेयरिंग है इसको देखें तो दिस समवट लुक्स सिमिलर इन अपीयरेंस, सो दैट्स व्हाई दे हैव नेम्ड दिस एज द मंक्स फूड. आगे अगर हम जाएँ इसकी हैबिटेट के बारे में देखें तो माउंटेनियस रीजन्स ऑफ यूरोप एंड हिमालय ये इसकी कॉमन हैबिटेट्स है. और प्लांट डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो प्लांट इज़ ए पेरिनियल हर्ब. एंड पेरिनियल हर्ब का मतलब मीन्स पेरिनियल हर्ब मीन्स द प्लांट लिव्स फॉर मोर देन 2 years. सो प्लांट की जो इसमें लाइफ स्पेन है that is more than 2 years, and that's why it is called a perennial herb. Leaves are long stalked means जो leaf के साथ stalk होता है that is long, and here you can see in this image also the stalk is long, as you can see here. This is the long stalk of the leaves. So the stalk of the leaf is mostly long. Flowers have 5 petals which are violet colored, and the upper posterior petal is helmet shaped. So in the previous slide you have already seen the flower, and if you look at that upper petal of the flower, it looks like a helmet. Now if we go further and look at the medicinal constituents of this plant, so the main constituents in this plant includes crystalline alkaloids as well as amorphous alkaloids. Crystalline alkaloids include aconitine, while amorphous alkaloids include aconine and benzoconine. Uses की अगर हम बात करें तो इसकी यूजेस में इसके यूजेस में एंटी हाइपरटेंसिव, कार्डियक डिप्रेसेंट which means that it depresses cardiac activity or lowers the cardiac activity. It also has anesthetic effect and so used in toothache which means टूथ पेन अगर हो जाए तो उसमें यूज़ होता है. रियूमेटिज्म which means the inflammation of joints or muscles, तो उसमें यूज़ होता है. और इसके अलावा इसका जो टिंचर बनाते हैं मोस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन में, सो स्मॉल और डाइल्यूट डोजेस में वो उसको यूज़ करते हैं एज एंटीपायरेटिक. सो एलोपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मोस्टली इसको अवॉइड किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिवियर टॉक्सिसिटी. और अगर हम देखें इसको तो अबाउट 2 to 3 मिलीग्राम की डोज में इट कैन काज सिवियर रिस्पायरेटरी फेलियर. 2 to 3 मिलीग्राम में अगर ये लिया जाए तो 2 to 3 milligram dose में it can cause severe respiratory failure, and it can also cause this cardiac failure. So that's why it is mostly avoided. Now next अगर हम बात करें the next plant in the family Ranunculaceae is known as Hydrastis. और इसके कॉमन नेम्स को अगर हम देखें तो गोल्डन सील, येलो रूट, येलो cocoon, इंडियन टर्मेरिक, Hydrastis rhizome, Rhizoma hydrastis. These are some of the common names that are used for Hydrastis. और अगर हम देखें तो गोल्डन सील या येलो रूट नेम जो इसको दिया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस द रूट्स ऑफ दिस प्लांट. और इसके कलर को अगर हम देखें तो ब्राइट येलो कलर के इसके रूट्स होते हैं.
और इंडियन टर्मेरिक भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज दी रूट्स समवट दे आर लुकिंग लाइक टर्मेरिक, टर्मेरिक की तरह दिखाई देते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंडियन टर्मेरिक। बोटेनिकल नेम इसका है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, और इसका जो मेन पार्ट यूज होता है दैट इज द ड्राई राइजोम एंड रूट्स। हैबिटेट में इसके आ जाते हैं कनाडा और अमेरिका। सो प्लांट डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें हाइड्रेस्टिस की, सो दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक अंडरग्राउंड पोर्शन है इसका और एक है एरियल पोर्शन। अंडरग्राउंड पोर्शन में हमारे पास आ जाता है हॉरिजॉन्टल राइजोम, हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द हॉरिजॉन्टल राइजोम ऑफ द प्लांट, और इस राइजोम से फिर 3 स्मॉल रूट्स स्प्रेड हुए एराइज हुए हैं। सो the underground portion mainly consists of rhizome and small roots are arising from this horizontal rhizome। और अगर हम एरियल पोर्शन की बात करें तो एरियल पोर्शन इसका अबाउट 1 to 2 decimeter, which means decimeter means tenth of a meter, 1/10 of a meter। so 1 to 2 decimeter इसका होता है एरियल पोर्शन। और इसकी लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स आर serrate, which means they have margins like this, they have like this margins। here also you can see the margins are like saw-like, so they have serrate margins. Palmately means here you can see palm of the hand, if you look at, so there are 5 leaves present here, and which are giving the appearance of a palm from which the 5 fingers are arising. So the 5 leaves are arising, and so that's why they are called palmately leaves. And fruit is the crimson berry. Crimson means deep red color। so इसका जो fruit होता है it is a berry and it is deep red in color। here you can see this is the fruit which is deep red in color। अगर हम मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें इसमें, तो हाइड्रेस्टिस में जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है दैट इज द अल्कलाइड दैट इज नोन एज हाइड्रेस्टीन, और इसके अलावा बेरबेरीन और कैनेडीन आर सम ऑफ द अदर कंस्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द हाइड्रेस्टिस। यूजेस की अगर हम देखें इसमें, तो इसको एज एस्ट्रेंजेंट इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। और एस्ट्रेंजेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इट इज़ एक्चुअली precipitating the proteins on the surface such as skin, so it causes tightness of the skin, it reduces bleeding from minor abrasions etc, and it also it is used as hemostatic, so it reduces actually bleeding। और अगर दूसरे यूजेस की अगर हम बात करें तो गिटार में इसको यूज़ करते हैं, एंड गिटार इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड इसके अलावा इसमें आ जाता है मीनोरेजिया। एंड व्हाट इज़ मीनोरेजिया? मीनोरेजिया मीन एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन। सो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन में इसको यूज़ करते हैं, और इसके अलावा नोज ब्लीडिंग, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, excessive menstruation, excessive menstruation में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, द थर्ड प्लांट इन दी फैमिली रेननकुलेसी इज नोन एज पल्सटेला। और पल्सटेला के कॉमन नेम्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं पेस्क्यू फ्लावर, वेंट फ्लावर, मीडो एनिमोन, पेस फ्लावर, एज वेल एज ईस्टर फ्लावर। सो दीज आर सम ऑफ दी कॉमन नेम्स ऑफ दिस प्लांट। और इसको अगर हम देखें पेस्क्यू या ईस्टर फ्लावर, it has been given this name because this plant blooms in early spring। early spring में इसकी blooming होती है, that's why it is known as this Easter flower or fescue flower। और पल्सटेला नॉर्मली दिस इज ornamental plant, मतलब जो एज ornamental plant इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। और इसके देयर आर अबाउट 33 स्पीशीज ऑफ दिस प्लांट, बट इसमें जो मेजर मेडिसिनल स्पीशी के तौर पर यूज़ होती है वो है एनिमोन पल्सटेला। और इसके अलावा इसमें दूसरा एक प्लांट भी आ जाता है जिसमें है एनिमोन प्राटेंसिस, PRA प्राटेंसिस। सो इसमें प्राटेंसिस और पल्सटेला ये दोनों प्लांट जो है देट हैव सम मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। पार्ट यूज की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है ड्राइड होल हर्ब, और हैबिटेट इसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है। प्लांट डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें, सो अगेन द प्लांट इज ए पेरिनियल हर्ब व्हिच मींस इट लिव्स फॉर मोर देन 2 years। लीव्स आर sessile, sessile means they do not have a stalk or no petiole, and the leaf is directly attached to the stem। it is bi or dry pinnate, so which means that the now what actually we means by pinnate? Pinnate is actually means we have this central stem that is called rachis, और इस rachis से एक साइड पे लीफ गया है दूसरी साइड पे, so this is called pinnate leaf। अगर इसमें नंबर ऑफ लीव्स इवन हो तो उसको हम फिर कहते हैं इवन पिन्नेट, और अगर इसमें नंबर ऑफ लीव्स आर ऑड, मतलब इसमें सेंटर में ये एक जो आ जाता है, तो
the number of leaves become odd. So this one is called odd pinnate, and this one is called even pinnate, या इसको हम पेरी पिन्नेट और इसको एम पेरी पिन्नेट भी कहते हैं. सो यहाँ पे जो लीव्स होते हैं they are bi or tripinnate, which actually are the form of the compound leaves. और bi और tripinnate का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर बाई पिन्नेट है तो दिस इज ए सेंट्रल रेचिस, इससे आ जाता है फिर एक और स्मॉल रेचिस, और इस रेचिस पे फिर लीव्स एराइज होते हैं सिमिलरली इस साइड पे भी. और अगर ट्राई पेन्नेट हो तो यहाँ पे आ जाता है सेंट्रल रेचिस, इसके बाद एक और रेचिस, और इसके बाद एक और रेचिस, और फिर इस रेचिस पे लीव्स एराइज होता है. सो दिस वन इज ट्राई पेन्नेट. ये वाला जो है दिस इज ट्राई पिन्नेट, और ये वाला जो है दिस इज बाई पिन्नेट. फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट इसमें है द फ्रूट इज एकीन, और एकीन फ्रूट इट इज़ एक्चुअली सिंगल सीडेड और ड्राई फ्रूट होता है, जिसमें जो सीड होता है दैट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड ए हार्ड शेल. सो यहाँ पे हमने जो दिया है स्ट्रॉबेरी में अगर ये येलो स्मॉल माइन्यूट आपको नज़र आ रहे हैं, so these are actually a form of achein, and this is actually the fruit. Strawberry as a whole is not a fruit. This yellowish, these tiny seeds that are present on the surface of the strawberry, this is actually an achein. और अगर हम इसकी characteristics की बात करें तो it has this outer hard shell yellowish in color, और इस hard shell के अंदर फिर seed present होता है, और वो seed जो होता है वो इस outer hard shell के साथ attach होता है. So it is a single seeded dry fruit that is present inside a hard shell. Now अगर हम आगे जाके इसको मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स को देखें, सो इसमें प्लांट में जो इसे ऑब्टेन करते हैं दैट इज़ द ऑयल ऑफ एनिमोन विच इज़ ऑब्टेन थ्रू डिस्टिलेशन ऑफ वाटर. और इसकी कोई खास इतनी थेराप्यूटिक वैल्यू है नहीं, बट ट्रिवियल या ट्रेडिशनल यूज़ में इसको एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता था. अगर हम ऑयल ऑफ एनिमोन की बात करें तो इसकी कुछ अर्से बाद फिर डिकम्पोजिशन भी हो जाती है, और इसमें एक कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम एनिमोन कहते हैं. अब ये एनिमोन जो कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है, एनिमोन इज एक्चुअली इट इज़ ए वेरी पावरफुल इरिटेंट. So it causes irritation, and in higher doses it can cause this condition that is called severe gastroenteritis. So gastroenteritis भी ये cause कर सकता है. और इसके अलावा इसकी जो एक्टिविटी है it causes depression of the रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है, और इसके अलावा ये सीएनएस टॉक्सिसिटी भी काज करता है. सो सीएनएस डिप्रेशन भी इसमें आ जाता है, स्पेसिफिकली स्पाइनल कार्ड डिप्रेशन इसमें आ जाता है. सो मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें जो आ जाते हैं वो है ऑयल ऑफ एनिमोन. यूज इसके कौन से हैं? सो मेजर इसके जो यूज़ है उसमें आ जाता है एंटीस्पाज्मोडिक, एज एंटीस्पाज्मोडिक यूज़ होता है. इसके अलावा एमिनागोग इसका एक एक्शन है विच मीन्स इट इंक्रीजेज मेंस्ट्रुएशन, हेडेक में एज ए रिलीफ के तौर पर, और न्यूरल्जिया which means nerve pain due to injury or any disorder due to or any damage to nerves या neurons के डैमेज की वजह से जो पेन होता है that is actually न्यूरोलजिया. और यूज़ इसका एमिनोरिया में ज़ाहिर है इट इज़ एमिनागोग which means it increases menstruation. सो अगर एमिनोरिया है जहाँ पे there is no menstruation, so इसमें ये यूज़ हो सकता है, and it can regularize this menstruation. और होम्योपैथी में इसको मीजल्स में एज ए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है. मीजल्स इज एक्चुअली ए वायरल इन्फेक्शन, सो मीजल्स में भी इसका यूज़ है इन होम्योपैथी. नाउ अगर हम लास्ट प्लांट में इसके लास्ट प्लांट की बात करें दैट इज कॉल्ड लार्कस्पर. और लार्कस्पर के कॉमन नेम्स है लार्कस्पर सीड, लार्कस्पर फ्ला एंड नाइट स्पर. बोटेनिकल नेम्स अगर हम देखें तो डिल्फिनियम एजासिस इज बोटेनिकल नेम, और ड्राई ट्राइब सीड इज द पार्टूस. इसके अलावा अगर हम प्लांट डिस्क्रिप्शन की बात करें सो इट इज़ एनुअल हब अबाउट 1.5 फीट इसकी हाइट होती है. लीव्स आर सीसाइल विच मीन्स दैट देयर इज नो स्टॉक. फ्लावर्स में भी ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लू, पर्पल और सो इसके फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेसीम. और अगेन रेसीम, व्हाट इज रेसीम? रेसीम्स मीन देयर इज ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल एक्सिस. जो सेंट्रल स्टेम होती है इसकी अपवर्ड ग्रोथ होती है इसमें. और इसके अलावा दी old flowers are at the bottom while the young flowers are at the top. So जो young flowers होते हैं they are at the top, the old flowers they are at the bottom, and this is a form of inflorescence. So इस plant में जो inflorescence होता है that is a raceme inflorescence. Now medicinal constituents पे अगर हम आ जाए तो इसमें main constituents में एजासीन, एजागुनीन और मिथाइल केकोनेटीन ये main constituents है. और uses इसका है as a parasiticide in tuberculosis.
So pediculosis, what is pediculosis? It actually means this lice infestation या जुएं मारने की दवाई जिसे हम कहते हैं. सो जुएं मारने में ये हेल्पफुल है. और इसका एक टिंचर भी बनाते हैं जिसको यूज़ करते हैं एज ए रिलीफ एड फॉर एस्थमा. सो एस्थमा में ये इसकी यूज़ है. इसका टिंचर एस्थमा में यूज़ करते हैं. नाउ मोस्टली इसके जो प्लांट्स के इस प्लांट के जो पार्ट्स है दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस और सिवियर digestive discomfort cause कर सकते हैं. So its use should be avoided in higher doses specifically, and also it is a skin irritant. So it is better to avoid the contact with this plant. So this was about the first family, that is Ranunculaceae. In the next lecture we will be discussing the second family, that is the Epocinaceae, and it includes two plants, that is Raudia and Dithyramthus.